Hello guys, so it was not that much a good day for the trading. Okay, in the morning market opened in the expected range, so that was not a big deal. But the thing is, uh, after the opening, as market is taking some support from this particular level, this was the second distribution that I mentioned in the pre-market analysis audio today, and told to you that whenever market is going to cross above this PD edge, okay, then we can go for some movement. Okay, then we can go for some trade and we can have some movement. But the thing is, यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छी मूवमेंट नहीं दी है. पर्सनली आई हैव टेकन सम ट्रेड ओवर हियर एंड एग्जिटेड समवेयर अराउंड हियर. ओके, but the thing is, as market was not moving with a great moment, okay, then better to take a exit. So took the exit somewhere around here, and after that I completely avoided the trading. Here I was looking for some trade, but as this was the candle closing, yes, this is the piercing candle and this is the breakout, yes, this is good. But the thing is, as we are not having any follow up over there, so we cannot go for the trade over there. This is the double distribution trend breakout. Okay, this is the initial balance range, and it was the narrow one. Market gave us the breakout over here, but there was no follow up. And whenever there is no follow up, we have to avoid. That's it. So यहाँ पर देख तो रहा था, लेकिन क्या था कि जिस तरह से कैंडल क्लोज करके फॉलो अप नहीं आया है, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनता था, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया है. अब यहाँ पर ये जो डाउनफॉल हुआ, इसका एक जस्टिफिकेशन हम कह सकते हैं कि भाई चलो यहाँ पर ये जो फॉल आया क्यों आया, बिकॉज जिन्होंने भी यहाँ पर बाय किया है, यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर बाय किया, ये तीनों कैंडल में जिन्होंने भी बाय किया है, बाय लुकिंग एट दिस डे हाई टू बी ब्रोकन, डे हाई जिस तरह से ब्रेक हुआ है यहाँ पर, जिन्होंने अग्रेसिवली यहाँ पर बाय किया है, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस जो होगा, कुछ तो लोग यहाँ पर ये कैंडल के लो के नीचे यहाँ पर एग्जिट करेंगे, कोई को लोग यहाँ पर एग्जिट करेंगे, कोई को लोग यहाँ पर एग्जिट करेंगे. तो ये सारी की सारी जो मूवमेंट है वो वही है. ओके, तो ये क्या है, स्टॉप लॉस ट्रिगरिंग वाली मूवमेंट है. एंड ओवरऑल जो ब्रोडर कंटेक्स्ट है वो यहाँ पर यही कह रहा है कि भाई चलो साइडवेज डे था, वेट करना था, दैट्स इट. एंड इनिशियल बैलेंस 6 स्टेप्स ऑफ मार्केट डेज, उसी के बारे में ही तो है. हाँ, अब यहाँ पर दूसरा भी एक है, कल मार्केट ने हमें टीएसआर ट्रेड दिया यहाँ पर. ओके, in live market session also I was explaining the same, and from this and यहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया. अब ये हुआ डायनेमिक एसएल. अब डायनेमिक एसएल तक अगर हम गिनेंगे तो ये कितने पॉइंट्स है, दिस इज द 270 पॉइंट इन राउंड फिगर. ओके, एंड अगर टॉप की बात करें तो यहाँ तक का मोर देन 1%. अब यहाँ पर साइडवेज डे है, तो यहाँ पर एग्जिटिंग जो है, एग्जिट किस तरह से किया जाए. तो जैसे आपको ये पता चलता है कि भाई चलो ये यहाँ पर खत्म हो गया है, तो यहाँ पर से क्या करना चाहिए, धीरे धीरे एग्जिट करनी चाहिए. एंड अगर यहाँ पर भी जिस तरह से हमने यहाँ पर ऊपर की ओर हमने जिस तरह से वेट किया था कि भाई चलो कुछ फॉलो पाने देते हैं, तो ये वाले केस में भी अगर आपको कोई फॉलो अप मिलता है ऑन द डाउन साइड, तो वहां पर एग्जिट करो, ना कि यहाँ पर ही. ओके, तो ये आप कुछ ट्रायल एंड एरर बेस पर कर सकते हैं. अदरवाइज दूसरा भी एक है कि जितना आप बैक टेस्ट करोगे बेस्ड ऑन द टीएसआर मेथड, उतना ही आपको ज्यादा पता लगेगा कि यहाँ पर ये वाली मेथड से ट्रेडिंग किस तरह से होता है. बिकॉज लोग करते क्या है, लोग सीखते तो है, इंफॉर्मेशन तो काफी सारी है, बट वहां से इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप करना. I am teaching to you in mentoring program that if you are going to put information and intelligence first at all time, then you are going to get the money all the time. So here information तो आपके पास सारी की सारी है, but the thing is आपके पास इंटेलिजेंस कितना है, आपने वो डेवलप किया कि नहीं, वो आपके ऊपर है. वो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो आपको ही करना पड़ेगा. वो मैं आपको मेंटरिंग प्रोग्राम में भी सिखाता ही हूँ कि भाई चलो ये आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई और ऑप्शन है ही नहीं. हाँ, यहाँ पर कोई ऑप्शन है ही नहीं. आप लोग चाहे कितना भी रुपया यहाँ पर मेंटरिंग प्रोग्राम में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में दे दो, ओके, वॉट एवर यू आर गोइंग टू पे, whether it is a 10,000, 30,000, 50,000, 1 lakh, 2 lakh, whatever it is. But ultimately, when you are going to understand the market dynamics by your own self, then and then only market is going to pay you. Okay, so here this was the thing. Along with that, on the chart, it is very clear that we are having the indecisive range over here between this R3 to the R4. Why? Because the DR1 it is in between that. So here this was the sideways day, that's it. Now if you are going to look out at the broader context on the daily time frame, then it is having some pose over there. It is having some pose here. This is the base candle.
market broke the previous week high, it closed as well yesterday, but today it is having some rejection. But the thing is, if you look back then, here if you are going to analyze the market profile structure of this particular day, what is this day? This 24th of January, this structure, here this was the thing. Here we are having the single print over there, single print, and Virgin POC was there. Yes, Virgin POC, it is not that much good now. Why? Because and the time duration over here, it is quite very much big. But other thing is, yes, we are having the distribution over there. So somebody sold over there. So we have to consider, that's it, single print present over there. And if you are going to look out for that from the market profile structure, then also you are going to get the same reason for that. Okay, so now for the tomorrow and all such things, what we have to do is, let me explain you from the RSI part as well. Yes guys, I am not using that much RSI, but in side reference some of the time I am using that. Now here the thing is, as I said in the last week, that currently market is in the correction phase. It is the time correction, but again market started moving on the higher side. Then what is this? There is nothing but we can consider this as a somewhat false movement out there. Somewhat false movement out there means what market may going to do is, again market coming back to the lower level somewhere around here, and finally RSI the 20 EMA going to touch over here in between somewhere around this particular range, 42,200 to 400 range. Yes, it can be anything. I am not going to make this 100% correct, but the thing is, we can expect something like that. Okay, immediately market may going to move on the higher side. No, I think market should correct something. Okay, otherwise if you are going to look out this from the order flow, the cumulative delta, yes, it is quite very much positive, so that is okay. But the thing is, broader context, it is somewhat very confusing nowadays. So kindly stay light for a few days. And also I explained in the live market session yesterday that in the May month there will be somewhat more indecision. Okay, there is the probability that in May month we are going to have somewhat range bound movement, sideways movement. Yes, we cannot say very clearly, but there is something over there. That's it, from the price itself. Okay, from the price itself there is something. So this is it for today. What you have to do, kindly wait for the tomorrow's pre-market analysis audio in our Telegram channel, and like to this video, subscribe to this channel, and comment below this video as well. Thank you guys.